Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Farzana Shaheen with Brain Train. We are doing reading comprehension. Reading comprehension के पढ़ते कैसे हैं और पढ़ने के बाद फिर उसका मतलब भी समझ सकें, इस काबिल हों कि जवाब दे सकें, ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं इसमें. It's a beginner lowest level number 1 but lesson is 3. Lesson number 3 आज हम कर रहे हैं. Let's see. Today the topic is the snack in the sack. The words are in the egg family. यानी जितने भी लफ्ज बनेंगे उनकी ये मोस्टली जो है उनमें से उनकी आवाज एंड पे egg होगी. Just like snack, egg sound. Sack, egg sound. This is a sack. You have already read these words, you know these words, this and is, so it's not new. So some words we are learning, they would be new. So this is a sack. This is a snack. Sack, snack. There is a different, only one spellings difference you can see. N, snack. Snack यानी जो खाने पीने की आपकी अशिया होती हैं, कोई भी उसमें आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये सारे स्नैक्स हैं. और सैक इज पैकिंग के लिए बोरी भी हो सकती है, लिफाफा भी हो सकता है. सो इट्स अ सैक. A pack, again egg sound. We put only p in the beginning. Pack my snack. I pack my snack. The snack is in the sack. The snack is in the sack. I put the snack in my backpack. This is the backpack. So I put the snack in my backpack. You have to read with me, then you will know how to pronounce, how to read. जब मैं पढ़ रही हूँ मेरे साथ साथ पढ़ना है. I'll give you time. Okay, we go to the next page. Jack, 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 as, has, some, tacks. Jack has some tacks. He put the tacks into a stack. What are the tacks? You know, these are the pins like that. Pins इस तरह की जो होती हैं, thumbnails type, ये इनको टैग्स कहते हैं. और स्टैक यानी उसको किसी एक बॉक्स में, डिब्बे में बंद करना, एक पैकिंग जो उसकी होगी वो स्टैक कहलाएगी. So his tags are black. टैग्स का कलर ब्लैक है. He has a stack of black tacks. So you can see all the words are egg, stack, black, tacks. तो जो सारी उसकी स्टैक्स हैं वो ब्लैक कलर की हैं और उसके पास एक ब्लैक कलर का टैक्स का बॉक्स है. Question. What is in the sack? Sack में क्या है? Remember हमने पढ़ा था. So we can see in that. This was the answer. The snack is in the
sack. Sack में क्या था? Snack. Snack. So we'll write the answer. The snack. Question: what is in the sack? The snack is in the sack. तो ये what है, इसकी जगह पे हमने the snack लगा दिया, बाकी वही सेंटेंस आगे से. बिल्कुल easy way ये है आंसर का. Second question: what does Jack have? Jack के पास क्या है? What does Jack have? So now we have to tell क्या था Jack के पास. Do you remember? He has a stack of black tacks. उसके पास एक black tacks का stack है, डिब्बा, एक box, packing. Question is, what does Jack have? Jack has a stack of black tacks. So here we can write Jack or we can write he. Anything we can write here. So उसके पास जो है एक stack है black tacks का. Third question, where is the snack? Snack कहाँ है? Answer was, my snack is in my backpack. Backpack में इसके अंदर रख लिया पैक करके. So वहाँ पे चूंकि my नहीं पूछा था, सिर्फ snack की बात की थी, so we are not writing my, we are answering this one. The snack is in my backpack. Right? To the point answer जो पूछा गया वो हम बता रहे हैं. और हम तीनों को आंसर्स कर चुके हैं. I think you understood and you enjoyed it. Just give me the comments right there. नीचे लिखे comments के कैसा लग रहा है आपको. आज हमारा थर्ड लेसन था. Are you enjoying? So we will try to make it better. If there is something which should be, you can suggest me. So till next video, please subscribe and like it, share with your friends. बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको अलर्ट्स मिलते रहे जब भी नई वीडियो आए. तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज.